Hi friends, in previous lecture we have discussed about the exercise 1.2 and today we will discuss exercise 1.3. Before that we have to understand one theorem which says let P be a prime number if P divides a square, then P divides a, where a is a positive integer. ये थ्योरम जो है गिवन है कि अगर p एक प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर जो है अगर ए स्क्वायर प्राइम नंबर से कोई जो है नंबर का स्क्वायर जो है डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी उससे डिवाइड होगा. p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p डिवाइड्स a. ओके, वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर. इस थ्योरम का यूज करके हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. एक अभी पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं. प्रूव दैट √3 इज इरेशनल. ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन वाला केस मानते हैं. तो हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे. लेट अस अज्यूम दैट √3 is rational. Okay, and if it is rational, then we can find integers a and b such that where b is not equal to 0, such that √3 equal to a upon b. Okay, or a equal to b √3. Squaring both sides, a square equal to 3b square. Therefore, a square is divisible by 3. Hence, a is also divisible by 3. तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने थ्योरम क्या पढ़ रखी है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a. ओके, क्लियर. यही इस थ्योरम का यूज है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, हेंस a इज आल्सो डिविजिबल बाई 3. तो a इज डिविजिबल बाई 3 मीन्स a इज, you can write like something 3m 3c whatever you want, multiple of 3, because it is divisible by 3. So you can write it as a multiple of 3. Okay, where c is some integer. Now substituting the value of a in equation 1, and what we will get, 9c square equal to 3b square, or b square equal to 3c square. Here, check it. Okay, 9c square equal to 3b square, which means b square which is equal to 3c square. Now
That means b square is divisible by 3, which implicates that b is also divisible by 3. Therefore, A and B have at least 3 as a common factor, which contradicts the fact. Hence, root 3 is irrational. Okay? In this manner you have to prove. ये कॉन्ट्रडिक्ट क्यों कर रहा है कि ए और बी जो है वो क्या है, उनके बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये क्या है, को प्राइम्स हैं. ठीक है, इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है. हम अब एक्सरसाइज पे मूव करते हैं. एक्सरसाइज 1.3. फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट root 5 is irrational. सबसे पहले क्या करेंगे, let us assume that root 5 is rational, and if it is rational then it will be equal to a upon b or p upon q, you can write, no problem, where b is not equal to 0. Okay, and there is no common factor of, or you can write a CF of a and b is 1. Okay, means there is no common factor between a and b. Now what you have to do, just write it in terms of a. A is equal to b root 5, squaring both sides. You will get a square equal to 5b square. Therefore, a square is divisible by 5. Hence, a is also divisible by 5. So let's say a equal to 5c. Now substituting the value, a square equal to 5b square is the, now we substitute the value, 5b square, 25c square equal to 5b square, or b square equal to 5c square. Hence, b square is also divisible by 5, which means b is divisible by 5. Therefore, a and b have at least
5 as common factor, which contradicts the situation. In all questions, whether it is 2, 3, 5, 7, 11, 13, whatever is given, the same method is to be applied everywhere. हर जगह आपको यही करना है, ठीक है. एक थ्योरम का बस यूज करना है. क्या यूज करना है? इफ p is a prime number, okay, and p divides a square, then p divides a, where a is a positive integer. उसी का यूज करके हमें सारे करने हैं, जितने भी इस तरीके क्वेश्चन होंगे, 5 हो, 7 हो, कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है, ठीक है. तो कॉन्ट्रडिक्ट द सिचुएशन, हेंस √5 इज इरेशनल. बहुत ईजी है, सब में एक ही तरीका अप्लाई करना है. अच्छे से आप सीख लीजिए, काम आएगा. क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 plus 2√5 is irrational. Now, इसमें क्या करना है? वही कॉन्ट्रडिक्शन का मेथड अपनाना. लेट अस अज्यूम थ्री प्लस 2√5 is rational. So we can write it like 3 plus 2√5 equal to a upon b. Or 2√5 equal to a upon b minus 3. So this we have seen last. 2√5 equal to a upon b minus 3. Okay. Now 2√5 equal to a minus 3b upon b. Okay. Or √5 equal to a minus 3b upon 2b. Up to everything is clear. Now this is what? Rational. This is what? Irrational. This is what? Irrational. ये तो हम पहले प्रूव कर चुके हैं ना. एंड दिस इज व्हाट? रेशनल. तो ये यहाँ पे क्या आ गया? कॉन्ट्रडिक्शन. विच कॉन्ट्रडिक्ट्स द सिचुएशन. Hence 3 plus 2√5 is irrational. ठीक है, क्लियर. थर्ड क्वेश्चंस. प्रूव दैट फॉलोइंग आर irrationals. तो इसको भी वही ऐसे ही करना है. पहला क्या है? 1/√2. ठीक है. तो एक तो जनरल तरीका आप जान लीजिए कि किसी भी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर का सम हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीज़न हो, वो क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा. बट हम अज्यूम करते हैं पहले कॉन्ट्रडिक्शन वाले मेथड से. सो लेट अस अज्यूम that 1/√2 is rational. So if it is rational, it can be written in the form of p upon q. Let's say p upon q, where q is not equal to 0.
So q equal to root 2 p. So q upon p equal to root 2. Now this is clearly rational and this is clearly irrational. Okay, which contradicts the situation. Hence 1 upon root 2 is irrational. Next question, number 2, 7 root 5. Again same thing, let's say this is rational and we write it in the form of p upon q. Okay, now what you have to do, just divide by 7 both sides. This will be p upon 7q. Now this is irrational and this is rational. Hence 7 root 5 is irrational. A contradiction. Initially we regarded that this is rational, इसीलिए तुमने p upon q की फॉर्म में लिखा था. मैंने हमने क्या माना कि ये रेशनल है. That is why we have written it in the form of p upon q. Okay, last question, 6 plus root 2. इसको हम थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं. Let us assume that 6 plus root 2 is rational number. Okay, so 6 plus root 2 is equal to p upon q. Okay, where q is not equal to 0. Clear? Now root 2 equal to p upon q minus 6, or root 2 equal to p minus 6q upon q. Now this is not possible because this is irrational. This is also not possible. Then this is rational. Hence this situation is contradictory. So 6 plus root 2 is irrational. Okay, काफ़ी छोटी एक्सरसाइज थी. हर इस तरीके के क्वेश्चन जो है इसी तरीके से सॉल्व होंगे. ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.